Hello everyone. So today we have with us the pioneer, the OG of Indian metaverse. He gained a lot of traction from Shark Tank India. Please welcome Mr. Krishnan Sunderarajan, the founder and CEO of Loka, first gamified metaverse app in India. So welcome, Krishnan. Thanks, Gaurang. Thank you so much, Anshika and Tanish. Thank you for having me here. It's Yeah. great having you here, honestly. I mean, we have seen your pitch and obviously we loved it. Thank you So, so much. can you tell us a little about Loka? Like, what exactly is Loka? यार लोका की स्टोरी ना बहुत I, I I'm a little older than you, so I don't know if you guys relate to this or not, but I will tell you how it originates in my head, right? So now back in the day when I was probably in my school, there was a game called GTA Punjab. ठीक है? And this was a game where it was a mod of Liberty City where the taxi drivers were Sardarjis, and if you would steal their Tractors taxi, and they would stuff. say something in Hindi. And मुझे याद है वो जब हिंदी में मैंने सुना ना, it just felt so real यार, वो दिल पे छू गई बात कि यार एक ट्रिपल ए गेम में मैं हिंदी आवाज सुन पा रहा हूँ. So, and then again, as I was growing up, I was playing various games based out of India, like Call of Duty Himachal Pradesh, या Hitman Mumbai, या Uncharted Tamil Nadu. I felt कि यार gaming has to be highly localized. Only then it makes a lot of sense for everybody. And I Grand Theft Auto Los Angeles is great, but I want Grand Theft Auto Mumbai or Delhi, right? So I said, let me just create a game that has two basic factors. One is something that everybody should be able to use, low entry barrier, मतलब 10,000 का मोबाइल भी उसे चलाना चाहिए. और दूसरा है कि वो अपने अपनी मिट्टी की फील देनी चाहिए in a sense, like so we wanted to create 3D versions of Indian cities and locations that not only look like the 3D version but also felt like the 3D version. Look create karna is the easy part, but feel create karna is the difficult part. And feel could be anything from the clothes you wear, that's part of the culture. The Hrithik Roshan ting 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 step, या फिर वो सलमान खान वाला बेल्ट हुक स्टेप, टू any goddamn background voice यार. So currently we're working on background noises, like दिल्ली में अगर background noise आएगी तो वो बोलेगा ओए भैया, versus Mumbai will be ओए दादा, versus Chennai or Bangalore would be ओए अन्ना. So that's Right. how मतलब locally we want to go into this, and that was the basic principle of Loka, and that's what we've started off with the Connaught Place map. Crazy, Right. crazy, crazy. Right. Okay, so like we all know you started with engineering Mhm. and then you did Like something everybody called else. yeah, exactly. Then you moved to something called Foodie Baba. And Yeah. then how you went on to this Loka metaverse. Like, can you share your entire journey? Because all the students will be watching this are in engineering only. हाँ हाँ. Like how you went So from engineering and all if this. सर दो रास्ते होते हैं, ठीक है? इंजीनियरिंग के बाद आप बिल्कुल इंजीनियरिंग से निकल के से द्वार पे खड़े हो तो दो रास्ते निकलते हैं. एक वो रास्ता है जो कहता है कि लेट्स जस्ट गो टू द कॉर्पोरेट लाइफ एंड एक्सपीरियंस स्टफ, लेट मी जस्ट probably repay my loan, or let me see how the world is, let me explore that. The other is कि let me just, I know कि engineering hasn't taught me a lot, so let me actually teach myself something. ठीक है? दो रास्ते हैं, एंड दोनों सही रास्ते हैं. देयर इज नो रॉन्ग आंसर हियर, राइट? सो आई सेड इंजीनियरिंग ने मेरे को सिखाया नहीं कुछ खास, बट मतलब no, and it wasn't engineering's fault, to be frank, it was my fault that I didn't learn as much. uh, and मैंने बोला let me just start off with a startup that's a mix of both, थोड़ा सा corporate वाला life भी, थोड़ा सा startup वाला scene भी. So I joined Zomato. ठीक है? And Zomato was a really cool place to work back in 13. And then मैंने थोड़ा सा काम करा, I realized कि this is amazing, but what would be even more amazing is probably starting my own company. And but वही है, प्रॉब्लम ये होती है कि जुनून होता है लेकिन स्किल सेट नहीं होता. So you realize that starting a company is much more, it's very less fancy as people sound it to be, and it's a lot of hard work. And I started something in December 15, had a co-founder there, went on to a TV show in 16, raised our first investment from the CEO of Densu Aegis Network, raised another round in 17. But na is pure, and operated that company for 4.5 years. I realized one thing is that ये जो डीलिंग देते हैं ना अपने ये जो टीवी पे, कि यार एक स्टार्टअप एक रेस है, रेस नहीं एक मैराथन है, ठीक है?
जिसमें आप दौड़ रहे हो और वो आप पहुंच जाओगे वहां पे, जो भी वॉट एवर दैट स्टोरी इज, दैट्स क्रैप. ठीक है. Right. What really it is, if you ask me, and this is on my only my personal judgment about this, is it's more like a PUBG game. Startup or struggles of an entrepreneurship is more like a survival game, वेयर आपको हर जगह से पंच पड़ रहे हैं, आप हर जगह से पिट रहे हो, लेकिन जीतता वो नहीं है जो तेज भाग रहा है, जीतता वो है जो 1000 पंच के बाद बिना वापस खड़ा हो जा रहा है. वो कह रहा है एक और मार दे, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा. तो Right. that's the essence of what entrepreneurship is, that you're not the fastest, you're not the smartest, you're not the coolest, you're not the most good looking, but you're definitely the most resilient. And that is what everybody should be striving for. क्योंकि जो बंदा टिका है, जिंदा है ना लंबे टाइम के लिए, वो आज नहीं तो कल कुछ उखाड़ ही लेगा. True. As simple as that. So इवेंचुअली like उस पंचेस में ही फील आता है. हाँ, ये रॉकी बाल्बोआ मूवी है, इफ यू गाइस हैव सीन रॉकी, कि वो 12 राउंड तक पिट रहा है, 13-14 राउंड पे वो वापस कम बैक आता है. दैट्स व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. तो डिड यू ऑलवेज नो कि यू वांटेड टू डू दिस, कि हमेशा से बिजनेस या इसी साइड में जाना है, या पहले जब आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो आपको लगा कि मैं तो आईआईटी में ही जाऊंगा या कुछ यार ऐसा देख, है? वन थिंग आई रियलाइज इज कि, एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग देमसेल्व्स कि यार आईआईटी, सो आई विश माय डैड टोल्ड मी कि आईआईटी क्यों जाना है. एंड आईआईटी इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल है, या आपको लाइफ में सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी. बट आपको आईआईटी इसलिए जाना है क्योंकि इट गिव्स यू टू थिंग्स. इट फर्स्टली गिव्स यू नेटवर्क, and secondly it gives you, so when you go to an investor, you can go to an investor saying मैं ninth pass हूँ, you can go to them saying मैं VIT SRM Manipal से हूँ, which are good private colleges, and you can also go to them saying मैं IIT से हूँ. ये तीनों क्या डिफाइन करते हैं फॉर एन इन्वेस्टर? व्हेन यू से मैं आईआईटी से हूँ, द ओनली थिंग इट डिफाइंस फॉर देम इज इस बंदे में मेहनत करने की कैपेबिलिटी है. इट डजंट डिफाइन दैट यू आर स्मार्ट, राइट? सो अगर आप वहां नहीं गए, जैसे मैं नहीं गया, तो आपको वो रेप्यूटेशन अलग तरीके से बनानी होती है. जैसे कि मैंने 5 साल घिस के अपनी प्रीवियस कंपनी में बनाया, जिसमें मैंने ये बताया कि यार मैं आईआईटी नहीं गया, बट मेरे में घिसने की क्षमता है. And that is what I did with that 4.55 years, right? So you have life, everything you do is indicators, right? matlab agar if Gorang today scores, let's say whatever CGPA 8 5 9, वो एक इंडिकेटर है ऑफ गौरांग की नॉट एबिलिटी बट मेहनत करने की Right. कैपेबिलिटी पे, right? So that's what you should. I never knew if I wanted to do a business. I in fact wanted to go to the army right after college. I actually gave my SSB, got selected, got rejected because of some medical very minute issue. And then I realized कि यार अब ना मैं वो करूंगा जो मेरी कॉलिंग है, और मेरी कॉलिंग कहती है कि कुछ फाड़ देंगे बिजनेस करके या कुछ सीख लेंगे कुछ करके, बट लेट मी जस्ट टेक द प्लंज. एंड thankfully my family has always supported my decisions, is despite failing numerous times, not on an yearly but on a daily basis. So yeah, but I'm glad it happened. Right. So, Zuckerberg, as we all know, Zuckerberg changed Facebook to Meta, Yeah. right? And Loka was founded in Essentially 2020, 2020. December 2020. Yes. So, like, it was somewhat aligned to Meta. So, like, you were planning ki, that this thing will grow up, metaverse thing, and suddenly this thing happened, or how, like, basically, I'm asking is how hard is it to start up? ठीक है कि जैसा भी बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में हैं, सो दे वांटेड टू स्टार्ट अप, तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री होगी विच दे शुड टारगेट ऑन कि जिनका उनको सही पोटेंशियल मिलेगा. यू स्टार्टेड इन 2020 and you started with metaverse, and then suddenly Zuckerberg introduced this Meta. Hmm. So now this thing actually is in the trend. Hmm. So this is the right time. And as we said ना कि हर स्टार्टअप एक टाइम पे ही पॉपुलर होता है. Hmm. दैट इज द पीक पॉइंट. फेसबुक का टाइम गया, वो Hmm. एक टाइम पे जितनी हाइप अचीव कर सकता था उसने अचीव करा, और उसके बेसिस पे वो आज तक चल रहा Hmm. है. इंस्टाग्राम अभी करंट उस फेज में, Hmm. इंस्टाग्राम भी डेड होने लगे. सो लाइक हाउ टू टारगेट दैट मार्केट की ये इवेंचुअली बढ़ने ही वाला है, एंड हाउ टू सिलेक्ट दैट पीपल. यार वो ना, that comes out of both your judgment of the future and a lot of luck. क्योंकि
if anybody could predict what will happen in the future, they would be billionaires, right? And you don't see a lot of billionaires. Um, so the point is, the only thing that I can tell you is, uh, generally when something happens, it doesn't happen just like that. There's a trend to it, and वो ट्रेंड ना बहुत बहुत इनविजिबल होता है, बट वो एग्जिस्ट करता है, विच इज, जैसे अभी एक छोटा सा ट्रेंड ये है कि YouTube का एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर डे इज 54 minutes, while if you compare it to a metaverse based game called Roblox, Roblox has an average engagement time every day of 158 minutes. So, and this has been a trend from 2018, जिसमें Roblox has been like 30, 40, 50, 70, or now it's 100 plus, but 50, 60 minutes always ahead of YouTube था वो. But nobody is actually seeing that trend, क्योंकि इंडिया में Roblox के प्लेयर्स ही नहीं है, तो आपको ट्रेंड भी नहीं पता चलेगा. So what there is always an underlying trend to why something is going up or while something will go up. You just have to be like, again, I would never be completely sure if it will work or not, but I have some idea that अगर वो यूएस में चल रहा है और यूएस का मार्केट और इंडियन मार्केट में some similarities हैं, there is a chance it might work here, and that's how you take the risk. There is no 100% guarantee, but there is a guarantee of, let's say, 30-40% that it will work. So Right. analyze the trend and then hit your mark. Absolutely. And analyzing the trend is the hardest part to do. It's easier said than done. You Right. have to go through, and always, and this is something I've learned the hard way, always trust data यार, क्योंकि data ना बहुत बड़ी चीज है. It's a gold mine out there. And data कभी झूठ नहीं बोलता. वो इंसान नहीं है, तो वो झूठ नहीं बोलता. And hence always trust data and keep focusing on data. Right, It will okay. reveal a story. So जिन लोगों को भी, all the students who want to go for startups should note this down, I think. But so when you were in SRM, so obviously when we were watching Shark Tank, हम सब बैठ के देखते थे because we were very interested, and then we heard of a person who was from SRM. So it hit very close to home कि oh ये तो हमारे ही हैं. Hmm. So were you a part of any clubs, or were there any clubs in SRM at that time, or Yeah, I community? I think I don't know actually. I think there were clubs there. Were probably always clubs and stuff there. But इशू ये था कि आई वॉज नेवर समबडी हु, मुझे ना जिंदगी में ऐसा लगता है कि यार अगर मुझे मजा आ रहा है ना तो मैं काम करूंगा, नहीं मजा आ रहा तो नहीं करूंगा, तो मैं मार्क्स के लिए नहीं पढ़ सकता. मतलब आई वुड रादर फेल देन जस्ट पास फॉर द हेक ऑफ इट. तो मैं कभी किसी क्लब्स और इसमें पार्ट नहीं हुआ. I was I was more into sports back in college. I was into football and stuff, but not much into these clubs or studies and stuff. But yes, एक चीज मैंने जिंदगी में सीखा है कि एक कोटा होता है जिंदगी में आपकी मेहनत का, कि जब तक आप वो लेवल नहीं पार करते ना, आप लेवल 2 पे नहीं जाते. सो आइदर अभी पढ़ाई करके वो कोटा क्लियर कर लो लेवल 2 पे Right. जाने के लिए, या आपको कॉलेज के बाद कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा. एंड टिल यू जिस वो घड़ा जब तक भरेगा नहीं ना, वो अगले लेवल पे आप पहुंचोगे ही नहीं. सो इट्स बेटर यू डू इट नाउ देन लेटर, or else you will have to do it at some point. True. So, like, did college help you in any Oh, way to college reach helped where me in you're a in? lot of ways. My co-founder in this venture is from my college. So, Okay, SRM college gave again. yeah, college gave me a co-founder. College also taught me great personal skills, and this is something that you should always remember. College is a lot to do with your interpersonal skill, how you communicate with people, how many friends you make, how you present yourself, how to build your image. All of that is something that college teaches you without teaching you as a course. And and you should be focusing on that as well apart from your studies. Study is obviously important, but you should also focus on that Right. So apart from having fun, obviously. this coding ninjas club I founded this 2 years back. So the main goal of this was कि जितने भी लोग हैं, the people who want to innovate, who want clubs बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं कैंपस में, बट हमारा मेन गोल ये था कि सब बच्चे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज जो एक्चुअली दे वांट टू पुट देम इन द मार्केट. सो हम उन सब बच्चों को लेके आए, एंड एक्चुअली द प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं और बाकी सारी चीजें जो है वो ऐसी है कि यार मैं सीनियर हूँ लेकिन मेरे को भी पता नहीं चलता कि ओके students are working on blockchain, NFTs, and other stuff. And we have launched our NFTs. We have some upcoming projects there also. So yeah, so college actually जो
कॉलेज से मिलता है, it's not studies, it's actually the environment and the network we have. ओ एब्सोल्युटली, True. मतलब जो आपके दोस्त बनेंगे यहाँ पे, एंड यू विल बी सरप्राइज कि उनमें से कुछ लोग, कोई जैसे आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज हु करंटली आर आईएएस ऑफिसर्स, somebody in the army, somebody doing business, somebody जो अलग corporates में, ENY में, Deloitte में. So I mean, you will end up having friends who are everywhere Right. across the spectrum, right? And वो बहुत जरूरी है टू मेक एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, सो दैट मैं एक कॉल घुमा के बोल सकता हूँ कि राहुल मेरे को ये वाला काम चाहिए भाई, करके दे. एंड वो करके देगा, क्योंकि देर इज अ दोस्ती. और कॉलेज की दोस्ती ना एक स्पेशल दोस्ती होती है, उसमें ना नहीं बोलते लोग, चाहे वो 10 साल भी हो जाए. So Right. always make Absolutely. friends there. I Clear can your tell race you सारा for a gate है. fact कि I don't know which branches you're from, but whatever SRM or any college in India is teaching you, life outside college is very different. Definitely, And True, definitely. actually. एंड उसमें अपने को खुद घिस के सीखना पड़ेगा. एंड इट्स Hmm. बेटर इफ यू आर लर्निंग प्रॉब्ली सॉलिडिटी, मतलब ब्लॉकचेन Yes, yes, बेस्ड yes, yes. थिंग्स एंड यूनिटी एंड स्टफ अभी से. इफ अगर आप सीखोगे, बिलीव मी इट विल हेल्प यू, मतलब बाउंडलेसली. Yes. So like currently I'm working. मैं पास आउट हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन वो ये ना कि जॉब में ठीक है पैसा मिलता है लेकिन वो फील नहीं आता. तो हाँ इसलिए ये सब जो है ये साइड में चलता रहता है कि यार. यार, गुड स्टफ यार, गुड स्टफ. क्योंकि यार वन वन थिंग आई ऑलवेज फेल्ट कि मतलब एक एक साइड हासिल होना चाहिए हमेशा जिंदगी में. एग्जैक्टली. वो एग्जैक्टली. ना इट हेल्प्स यू. कल को आपको यहाँ से खुशी नहीं तो वहां से खुशी मिलती है. जैसे मेरे लिए डेफिनेटली. साइड हसल रनिंग है. सो मेरे को ऐसा लगता है कि यार आज दिन खराब गया तो मैं आज ज्यादा किलोमीटर भाग लूंगा. तो फॉर मी इट्स दैट, मतलब. एंड व्हाट इट आल्सो डज फॉर मी, आई डोंट नो इफ इट डज फॉर यू, कि ऐसा लगता है मैं कहीं तो जीत रहा हूँ. एग्जैक्टली, सही बात है. एग्जैक्टली. हाँ तो मतलब अगर 9 से 5 काम कर रहे हो तो ठीक है, बट भाई यहाँ पे असली किक है वो. अगर हाँ, यार वो चीज नहीं भी चली ना तो भी लाइक कि भी एटलीस्ट एग्जीक्यूटेड इट, हाँ. एब्सोल्युटली यार, अपना हो गया. एब्सोल्युटली तो ये एब्सोल्युटली, है. आई कंप्लीटली एग्री. True. Okay. So हमने शार्क टैंक टीवी पे तो देख लिया, हमने देख लिया आपका पूरा पिच एंड एवरीथिंग, बट पीछे क्या हुआ? हाउ डिड यू रीच शार्क टैंक? Like how you started and applied, what was the process? Because we definitely will be having season 2. So क्या हाँ process रहता है if people are interested? Yeah, the process is. I can tell you what happened this season, and probably it might change next season, but I don't think it will, though. Mhm. But anyway, the journey was. I had applied. I was not intending to apply. In fact, मुझे लगा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक. I had actually gone to a reality TV show back in 16. Wasn't really successful. मतलब we raised funds there. It was successful for us, but the show wasn't too great. So मेरे को लगा कहीं उसी का रेप्लिका तो नहीं हुआ. एंड देयर हैव बीन वेरियस वर्जन्स ऑफ शार्क टैंक दैट हैव लॉन्च्ड बट Mhm. नॉट रियली बीन सक्सेसफुल. तो मैंने कहा अप्लाई करूं नहीं करूं. एंड देन आई सॉ थॉट यार चल यार कर देते हैं, अप्लाई करने में क्या जाता है. तो आई फिल्ड वन फॉर्म. देयर इज अनदर फॉर्म. देयर आर टू सेट्स ऑफ फॉर्म्स दैट यू नीड टू सेंड. Where did you find this form? यार आई थिंक उसका ना पोर्टल, उसका सम आई सॉ सम एड इन आइदर द न्यूज़पेपर और सम सोशल मीडिया, आई डोंट रिमेंबर कहाँ पे. तो इट Mhm. वाज, और उस समय ना दे हैड नॉट लाइक पुट इन मनी इनटू शोइंग अ लॉट ऑफ शार्क टैंक एड्स बिकॉज नोबडी Right. रियली न्यू अबाउट इट. बट मैंने अप्लाई करा, मैंने 10 लोगों को और बताया कि भाई तू भी अप्लाई कर दे. तो दैट्स हाउ प्रॉब्ली इट हैपेंड विद मोस्ट पीपल. एंड देन वो दो राउंड ऑफ फॉर्म्स वाले फिल्टर्स होते हैं. पहले आप फॉर्म भेजते हो, देन इफ दे लाइक यू दे सेंड यू अनदर फॉर्म टू फिल. देन दे इफ यू लाइक यू, इफ दे लाइक यू अगेन, देन उसके बाद एक मॉक इंटरव्यू होता है which happens in Delhi. It happened in ITC hotel. And वहाँ पे some of the Shark Tank का जो टीम मेंबर्स होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं. And if they Not the like, actual shark. not the actual sharks, yes. Okay. उस समय तो sharks were not even finalized who the sharks were. Oh. They were asking us who would you want as a So shark. when did this happen? This happened in so July mein I filled these two forms. August mein was the mock interview thing. Okay. And then they start calling you in batches. मतलब 10-10 के batch में Mhm. they start calling you. 10 startups every week वाले batch में. Okay. So अब ऑडिशन तो शुरू हो गया था मेरे ख्याल 10th of October onward से. मतलब ऑडिशन एज इन द शार्क टैंक का शूटिंग 10 ऑनवर्ड्स 10-10 के बैच में लोगों को हर हफ्ते बुलाते गए. बट मेरी क्योंकि किस्मत थोड़ी लेट खुलती है हमेशा जिंदगी में, तो मेरे को नवंबर 26 को बुलाया था.
दे सेड 26 को कॉल कि 30th को आ जाओ। मैंने कहा ठीक है जी आ जाएंगे। और फिर दे डू ऑल द अरेंजमेंट्स, प्रीटी गुड अरेंजमेंट्स एट जुहू, एंड सब कुछ होता है सॉर्टेड, होटल, ट्रांसफर्स, फूड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, प्रीटी कूल दैट वे। एंड आपको 5 दिन के लिए वहां जाना होता है, जिसमें 3 दिन इज योर कंडीशनिंग, इफ आई माइट कॉल इट, जिसमें कि because you're not from TV, I'm not from TV, we Right. don't know how to stand in front of the camera, what clothes to wear, how to behave in a certain way, something like that. But सो अब पूरे शार्क टैंक में ना एक ही स्क्रिप्टेड पार्ट होता है, वो है पिच। क्योंकि पिच तो आप तैयार करके आते हो, पिच ऑन द स्पॉट नहीं होता। उसके बाद जो भी होता है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, एंड टू स्पॉन्टेनियस इफ यू वुड आस्क मी। तो पहले 3 दिन आप वो पिच को अपनी तैयार करते हो, देयर टीम आल्सो हेल्प्स यू, क्योंकि क्या होता है ना, कमिंग फ्रॉम दैट स्टार्टअप बैकग्राउंड, मेरी पिच में बहुत सारे कैक, एलटीवी, एबिटा जैसे वर्ड्स होते हैं, जो कि उनके हिसाब से देवर सेइंग कि यार तुम शार्क्स को नहीं पिच कर रहे हो, वीसी, टीवी फ्रेंडली होना तुम चाहिए। हाँ हाँ, जनता true. को पिच कर रहे हो। तो इट हैज टू बी समथिंग लाइक दैट। एंड देन जिस दिन पिच था, उस दिन मैं 6:30 बजे उठा, मेरी कॉल टाइम 6:30 बजे थी, एंड मैं पहुंच गया सेट पे विद अ बंच ऑफ पीपल। एंड उस दिन आई थिंक 9 pitches वर देयर दैट डे। सो pitches happen on the Friday, Saturday, Sunday. 9 pitches every day. So there are around 27-30 pitches in a week. Right. सो मैं आया वहाँ पे, मैं फिर उसके बाद मेकअप वेकअप कराते हैं वो सबका। एंड आपके जो आप कपड़े लाए होते हैं उसको एक दिन पहले ले लेते हैं, दे आयरन एवरीथिंग, और वैसे बिल्कुल स्टार वाली फील की तरह से लटका देते हैं कि सर आपके कपड़े। तो वो सब पहन के आप रेडी हो जाते हैं, एंड एवरी स्टार्टअप इज गिवन अ स्लॉट, लाइक 1 2 3 4 करके 9 स्लॉट्स थे मेरे में। माई स्लॉट वाज 4th। एंड मतलब पहला मेरे समय ऐसा हुआ कि द फर्स्ट गाय केम वेंट इनटू द टैंक एंड ही वाज रिजेक्टेड। फिर सेकंड वाला गॉट इनटू द टैंक, ही वाज रिजेक्टेड। थर्ड रिजेक्टेड। फोर्थ मेरी बारी आई, बट मेरे में ना थोड़े टेक्निकल एडजस्टमेंट्स वगैरह करने थे, तो उन्होंने मेरे को 4 से शिफ्ट करके 8 पे डाल दिया। तो तो क्या नाम है, फिर चौथा बंदा गया, गॉट रिजेक्टेड। फिफ्थ स्टार्टअप गॉट रिजेक्टेड, सिक्स स्टार्टअप गॉट रिजेक्टेड, सेवेंथ स्टार्टअप गॉट रिजेक्टेड, 8th में था। तो अब और ना मैं सुबह के 6:30 से मैंने खाना नहीं खाया हुआ है, और मैं 2 रेड बुल पे जिंदा हूँ। तो राइट। मतलब आई वेंट इनसाइड। उसके बाद ना वो टनल में आप जाते हो, एंड देन वो फिर मतलब द टनल, इट्स अ 2 second गैप, एंड देन द डोर ओपन्स, एंड देन द पिच एंड व्हाटएवर स्टार्ट्स, राइट। तो जब वो दो, और मैं अकेला गया था पूरे उसमें, तो मैं गया, वो डोर 2 सेकंड का गैप, वो 2 सेकंड में ना ऐसा फील होता है कि भाई क्या मैं वापस चला जाऊं, क्या मैं एंड हाउ वापस लॉन्ग वाज दिस पिच? हाँ सर, इसका मिनट होता है। सो उसके बाद जब आप अंदर जाते हो, पिच होती है 1.5 घंटे की। सो Oh my God. आपको टीवी पे प्रॉब्ली यू गेट टू सी व्हाट 14 minutes, 12 minutes। 14 Yes, 15 12 minutes. हाँ, minutes. Yeah. बट बट द पिच इज 1.5 घंटा, जिसमें आई रिमेम्बर मैं गया, मैंने पिच दिया, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी, व्हिच प्रॉब्ली वाजंट शोन ऑन टीवी, इज आपसे पहले 7 स्टार्टअप आए थे, वो सारे रिजेक्ट हो गए, आप 8वें हो, आपको क्या लगता है आप सिलेक्ट हो जाओगे? अब यार मेरे मन में ना, जब मेरे से ऐसे कोई सवाल पूछता है, मैं होता हूँ भूखा, और मेरी बकर करने की वो एक आदत है, तो मैंने मतलब आई जस्ट कुड नॉट रेजिस्ट। मैंने बोला कि यार बहुत साल पहले ना मैम एक जेल था, और उस जेल में ना 7 बच्चे पैदा हुए थे, उनको मार दिया था, और 8वां ना कृष्ण ही आया था उस जेल में। Wow. एंड यहाँ पे भी 8वां कृष्ण ही आया, सो होपफुली वो फंडिंग लेके जाएगा यहाँ से। सो समथिंग लाइक दैट, ऐसी रैंडम बकर यार जो दिमाग में आ रही थी उस समय। एंड आई रियलाइज कि यार, एंड दिस इज समथिंग यू शुड अगेन, टचिंग बैक ऑन व्हाट आई सेड, is funding is about great businesses, great strategy, great go to market plans, but it's also about talking to human beings, Right. right? Absolutely. अगर वो मजा नहीं आ रहा ना बात करके, तो वो बोर्ड रूम से बियर वाली ट्रांजेक्शन कभी होगी ही नहीं। तो वो बहुत जरूरी है सीखना। एंड दैट इज व्हाट I've learned in my life कि यार जाओ, just be yourself. In fact, मेरे a lot of my friends who were watching the show called me up and just said one thing that just felt so happy, I felt so happy about, was कि यार तू शार्क टैंक पे वही था जो तू असली जिंदगी में है। And that is what the goal was. I was not there to be somebody I'm not, because I cannot be that person for long, at least.
Right. Go. So, ये जो 1 hour की pitch थी, like we saw, like you were extremely confident, but back of the mind था ना कि क्या होगा, like what will be, and best part was कि मन की आवाज सुनने के लिए बाहर जाके आता. हाँ So तो what exactly was going on? कि काफी ज्यादा intense roasting हुई थी या क्या, मतलब जो questions थे उनके, क्या वो ज्यादा ही grill हो चुके थे या? यार ऐसा ऐसा देख फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है ना विद एक्सपीरियंस इन लाइफ हम्म, मतलब वही मैं कह रहा हूँ बार बार आप जिंदगी में इतनी बार पिटे हो गिरे हो उठे हो तो ना आपको ना वो डर खत्म हो जाता है कि बुरे से बुरा अब ये क्या ही क्या बोल होगा. देगा मेरे को ये बुरा तो नहीं लग मतलब ये मेरे को कुछ सुना तो नहीं देगा ये बुरा तो नहीं मान जाएगा तो वो डर खत्म है ठीक है शार्क टैंक से बेइज्जत होके जाने में भी मेरे को कोई गम नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ इफ यू डोंट लाइक इट इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन सो जब जब वो ग्रिल कर रहे थे एंड दीज आर वेरी लेजिट क्वेश्चंस राइट मतलब दे आर एक्सपीरियंस्ड रियली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस फोक्स एंड दे आस्क रियली रेलेवेंट क्वेश्चंस तो उन्होंने जब पूछा देयर वर क्वेश्चन दैट आई कुड आंसर देयर वर क्वेश्चन दैट आई कुड नॉट आंसर बट वो नर्वसनेस हमेशा होती है यार और वो Right, नर्वसनेस ना आपको हमेशा याद दिलाती है कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है तेरे बस की इतनी भी नहीं है जितना तू दिखा रहा है सो वो right. नर्वसनेस बहुत जरूरी है लाइफ में बट एंड दैट नर्वसनेस इज ऑल्सो विथ मतलब मैं तो मच्छर हूँ यार इट हैपेंस इवन विद महेंद्र सिंह धोनी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई भी हो उनके साथ भी होता है बट व्हाट इज एंड दिस इज समथिंग आई डोंट हैव आइडल्स इन लाइफ बट the one idol I only have in life is MSD, and I keep reading about him and studying him and stuff. So one of the things that he says is that I'm extremely nervous all the time in a match, but not when I'm on the pitch. Right. Because when you're on the pitch, you don't have the time to be nervous. You don't have the liberty to be nervous. You have to perform, and that is what I've also tried to do in life. कि बाहर नर्वस हो जाओ जितना होना है बट एक बारी आ गए कदम रख दिया उसके बाद नर्वस नहीं हो सकते Okay, so the deal you got was that like you're completely satisfied with it, yeah, कि ओ यार एब्सोल्युटली you know. नॉट बट I बट saw that coming. हाँ सो द द फैक्ट इज कि यार जिंदगी में ना यू हैव टू एनालाइज स्टफ in a more objective manner. So I'll tell you how I was analyzing my thing. I was talking to जो शार्क टैंक का हेड बिजनेस हेड था वहाँ पे एंड मैंने ऐसी कैजुअली उससे पूछा कि यार एक चीज बता यहाँ पे 1 मिनट के एड का कॉस्ट क्या है शार्क टैंक का सो इसे 1.5 करोड़ रुपए सो मैंने बोला 1.5 करोड़ रुपए एंड इफ आई एम गेटिंग रफली 14 minutes I'm getting a lot of money from Sony yaar, in terms of Right. visibility, right? So essentially, whatever I got was roughly 18-20 lakhs plus that money, Uh, right? So if I look at it mathematically that way, एंड उसके लिए अगर मुझे कोई बोलता है कि यार अगर मेरे को कल को सोनी आती है ना मेरे घर पे और बोलती है कि भाई साहब मैं आपको 20 करोड़ की एड दूंगी और मेरे को 20% दे दो अपनी कंपनी में मैं बोलता ले ले कोई दिक्कत नहीं है definitely. and that is exactly what the deal was for me कि यार Uh-huh. I get Piyush I get Aman I get Anupam I get 40 lakhs I get 14 minutes of airtime on India's biggest primetime channel 24% great deal Easy, great. Okay, great. So like सब तो हो गया but like were you excited when you were on TV and when your family was watching you जब आपके बाकी सारे दोस्त देख रहे थे? यार I don't know if I was excited but I was just अब क्या होता है ना कि एडिटिंग ना एक बहुत बड़ा खेल है तो वो एडिटिंग में आप हीरो भी बन सकते हो आप विलन भी बन सकते हो भोंदू भी बन सकते हो कुछ भी बन सकते हो सो आई वाज जस्ट नर्वस इन अ वे कि मुझे पता है कि यार मैंने पंच डायलॉग मारे हैं शो पे लेकिन Right. मुझे नहीं पता वो दिखेंगे या नहीं सो आई वाज जस्ट नर्वस कि आर दे गोइंग टू प्रोजेक्ट मी जैसे फॉर एग्जांपल शो पे ना वो ऐसे पूछते हैं आपका हुक क्या है एंड देन दे शो कि मैं ऐसे ऐसे हाँ, नीचे देख रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या है बट असली में मैंने Show me वहां you पे just जवाब yeah. हाँ असली में मैंने उस क्वेश्चन का जवाब दिया था अश्नीर को Uh, जो uh, कि दिखाया नहीं था शो पे बट दिखाया था मैं कंफ्यूज हूँ सो हाँ. दैट इज द गेम ऑफ एडिटिंग वेयर दे कैन शो यू एज द हीरो दे कैन शो यू एज द विलन मैं बस नर्वस था कि यार मेरे को भोंदू ना दिखाएं यार मैं वो नहीं देखना चाहता बस दैट्स We इट can confirm कि ऐसा तो कुछ नहीं देखा हाँ हाँ but I'm like glad it didn't come out that way yes नहीं true
I mean, you were the hero definitely for all of us. हाँ, Shark थैंक यू Tank सो मच में. यार, थैंक्स. So how did it change your life? Did it affect you in any way? बाहर जाके आपके पास 3 sharks भी हैं अब in your business. तीन शार्क के आई वुड लाइक टू बिलीव तीन शार्क के पास मैं हूँ, बट बट यस, हाउ इट चेंजेस योर लाइफ इज, यार, फॉर एग्जांपल इट गिव्स यू 15 minutes of fame in life. People will know you. You can probably, आप नीचे जाते थे, मम्मी कहती थी यार जाके दूध ले आ, तो ले आते थे, बट अब आपको रास्ते में 3 लोग मिल जाते हैं, अरे आप शार्क टैंक पे थे. सो दैट जस्ट फील्स गुड, दैट्स ग्रेट. बट ये हमेशा याद रखना जरूरी है कि ये जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला जाता है. Right. The only thing that stays is the one that's behind me, which is Loka. हाँ, So, हाँ, uh, the biggest thing that happened for me from the Shark Tank is the fact that वो IIT वाली बात है, ब्रांड वाली बात है कि हाँ, now investors start taking you slightly more seriously. Right. दे से कि यार आप आईआईटी गए थे तो आपने मेहनत करी होगी, आप शार्क टैंक पे आए थे, देन यू मस्ट बी गुड. एंड दैट दीज आर इंडिकेटर्स एज आई सेड. एंड फॉर मी इट जस्ट एडेड टू माय इंडिकेटर सेइंग कि इसमें क्या पता दम हो, लेट मी कंसिडर हिम फॉर अ पार्टनर इंटरव्यू. तो हाँ, that is what it has done essentially for me in terms of effect. But yes, in terms of Loka as traffic, मुझे याद है कि यार वी जस्ट लॉन्च्ड अ नाइट बिफोर. ठीक है, जिस दिन एयर हो रहे थे उससे एक रात पहले हमने लॉन्च करा था ऑफिशियली फॉर पब्लिक. हाँ, नाउ वी हैव रफली 80,000 people on the platform, and probably will be hitting a lakh in a month, in probably a week. So matlab, it's been great for the business, it's been amazing visibility for us. But it is, and this is something I would request everybody who's applying for Shark Tank, don't go there for the fame, don't go Right. there for the girls. कि भाई मैं हो जाऊंगा अपने कॉलेज में फेमस, मतलब हर लड़की मेरे को पूछेगी, वो वाला एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए यार. सिर्फ you are only and you should be only recognized by your work and nothing else. True. Right. So, जो डील हुई थी उसके बाद you have started working on it या अभी चल रहेगा? Yeah, we were actually working on it even before the deal happened. So हाँ. when we launched there, that was Loka 1, this the one that you No, see I mean behind. with the sharks. Like Ha, shark have so started working with you or? no, the deal is yet to go through legally. But Mhm. yes, I am meeting Amit tomorrow. Amit is Piyush's co-founder in Lenskart. Okay, okay. So I will be meeting him tomorrow. अमन से मेरी व्हाट्सएप पे बात होती है, एंड अमन इज द क्रेजीएस्ट ऑफ देम ऑल. एंड मैंने बोला अमन को, यार व्हाट टाइम डज इट सूट यू, व्हेन आर यू अवेलेबल ऑन मंडे. कहता क्या अवेलेबिलिटी यार, कॉल व्हेनेवर यू वांट टू. मैंने कहा अच्छा जी, अब तो हम दोस्त बन गए हैं क्या. Right. So but yeah, I mean, I am yet to work with them legally, but yeah, I'm already talking to them. I'm already interacting with them, which feels great. Okay, so soon we'll Basically, be seeing both have headphones in Loka. Ha, absolutely. Irrespective of if the deal goes through, doesn't go through, takes time in 6 months, both will definitely be here. Aman Right. was actually very interested in you. So that is great. Okay. On that note, like I'll also like to tell all the students watching this that we are gonna have an event that is Technopoly, and you are one of the jury members for it. So I'll I'm introduce. honored, man. We are We honored. are honored. Yeah, but yeah, this is SRM's given me so much in my life, and this is probably one of the smallest way I can probably give back. Thank you so much. We are very honored. But very so I'd like to introduce it to everybody. So Technopoly basically consists of two parts. The first is the tech part, and the second is the non-tech part. So in the tech part, we are gonna have a quiz, a coding competition, and the teams that are selected in that they get some credits. It is basically like Monopoly. आपको credits मिलेंगे, आप आगे बढ़ोगे, और उसके बाद then we'll go for the portfolios. Now we will be providing all the participants with some portfolios. कोई business होगा उसका कोई idea दे देंगे, and then they'll have to pitch the ideas to you guys. And uske basis pe you'll have some criteria, you'll judge them, you'll give them credits, then we'll total all the credits, और जिसके पास सबसे ज़्यादा credits होंगे वो जीत जाएगा. And I hope I am clear. But okay, so what do you think, what do you expect from all the students जो pitch करने आएंगे आपके पास? यार मैं ना एक चीज, मतलब मुझे मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन एक यही है कि बीइंग पार्ट ऑफ द एसआरएम, आई नो कि
काफी बकर वाले लोग होते हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग somebody like me. So I'm expecting a lot of interesting things to happen on the show, or on the event rather, and a lot of interesting personalities to come apart from. So again, great pitches are about great vision, Right. great go to market strategies, and great conversations on how you explain everything. Right. So I'm expecting a lot of that to come. Do you have like some tips for all the students who go for the यार pitching? यार tip, I think the only tip is the only, so मुझे ना जिंदगी में ऐसा लगता है, और ये जनरली भी ट्रू है, कि if you can't explain something in simple words or simple sentences, you don't know the subject. Right. ठीक Right. है? So Definitely. if you can't explain, let's say for example, just take some business for example. um, let's say we take YouTube live. ठीक है? What is YouTube live? It is Twitch in YouTube. Or what is Oyo is Airbnb for India, right? Right. So something as simple as that. So if you can just put it in very simple forms, in terms of both explaining what the business is and how you will get from point zero to point X, then probably you've nailed it, and it's an amazing pitch. But it has to be explained crisp and briefly. Okay, so apart from that, for all the students who are watching this, आपके पास कोई टिप, अगर मुझे कोई स्टार्टअप के साथ जाना है, like basically we just got to know कि it is not that easy. हमें तो सिर्फ अच्छा वाला पार्ट दिखता है, where everything is nice and shining and everything, but पीछे बहुत कुछ होता है, a lot of struggle. So what are your tips for all of those students? Yeah, one of the things that's helped for me, I can only say what helped for me, and not like Right, this is true for everybody rather. वो ये है कि when you're climbing Mount Everest, right, and starting a successful company, probably building a multi-million dollar billion dollar company, is like climbing a Mount Everest, right? So when you're climbing Mount Everest, you should not be looking at where you are and where you need to be. You should be looking at, मैं यहाँ हूँ, let me just cover 1 kilometer and see उसके बाद क्या करना है. ठीक है? Right. So when I'm see I do roughly 40 kilometers a week in running, and every time I run, I don't think I'm going to do 12 kilometers or 15 kilometers. I'm just going to think, I'm thinking 3 किलोमीटर करते हैं फिर सोचेंगे, 7 किलोमीटर करते हैं फिर सोचेंगे, 9 किलोमीटर करते हैं फिर सोचेंगे, 11 हो गए अब सोचते हैं अब जहां रुकना है रुक जाऊंगा, and then I end up completing 50. so it And is a that is step by step process. how you have to look at short term goals with long term views, कि यार वहां पहुंचना है, but अभी let's just cover the short term goal here. Right. Great. Okay, so do you have anything to add on about Loka? Because we have a short game after this that Mhm. we'll play with you. Yeah, so that will be our final segment. If you like want to share any information about Loka or anything. So yeah, the only thing I'd probably share here is, I think Loka, and this is something we keep telling everywhere we go, is Loka is by for people of India, and whoever, probably if we go to a different country, to them. But it is essentially so who are the drivers of Loka? These are the people inside Loka, and we see this as how, probably if you're part of any religion, Islam, Hinduism, Buddhism, any religion, वो बुक ऑफ जेनेसिस ये कहती है कि भगवान ने पहले वर्ल्ड क्रिएट किया, उन्होंने Right. रूल्स डिफाइन करे, फिजिक्स डिफाइन करा, उसके बाद उसमें लोग डाल दिए, एंड लेट पीपल डिसाइड व्हाट हाउ दे वांटेड टू क्रिएट द वर्ल्ड. एंड वी लुक एट इट दैट वे, कि हमारा काम ये है ही नहीं बताना कि आपको क्या करना है, हमारा काम है आपको वर्ल्ड बना के देना, आप हमें बताइए कि हमें क्या और बेहतर कैसे कर पाए हम इस दुनिया को. दैट इज द ग्रैंडर विजन ऑफ लोका, एंड वी वांट मोर पीपल टू जॉइन इन द मिशन ऑफ क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट मेटावर्स, एंड प्रॉब्ली $1 billion company someday. Truly, I mean, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, because you are already from SRM, so we'll want to help you क्योंकि आप तो हमारे ही हो. अरे थैंक यू Definitely. सो More मच. of it's not like कि किसी ऑफिशियल के साथ बात कर रहे हैं. It's like कि हाँ, हम it's अपने like senior के सीनियर से साथ बात बात कर कर रहे कर हैं. रहे हैं. So it's more I'm of glad. like yeah. And likewise, I mean, just tell me how I can help you guys as well. Would always be glad to help. Thank you so much. I mean, as I said पहले भी, we would love to have an event on Loka Oh, absolutely, absolutely. in Very soon, yeah. SRM. Very So soon.
So that would be great. Okay, so let's move on to the rapid fire game. So obviously you don't, मतलब आपको बस 2-3 सेकंड मिलेंगे to start answering the question and then you can elaborate on that. हाँ 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 ठीक है, I love that. Great, Gaurang here can start. Sure. So, डील कितना इम्पोर्टेंट था? लाइक इफ यू डिडंट गेट द डील, सो क्या सीन रहता कि ओके, सब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि डील तो मिल गया डील ना, नहीं होता, डील तो पहली, अगर डील तो नहीं मिलता। डील नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जब मैं टीवी पे आया डील मिल चुकी थी तब, मतलब मेरा मेरा मोटिव टीवी पे 20 लाख की सोनी की डील लेनी थी, वो ले चुका था मैं, उसके बाद नहीं मिले मिले वो तो सेकेंडरी स्टेप था यार फॉर मी। क्रेजी, मतलब एवरीथिंग इज सॉर्टेड ऑलरेडी। हाँ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, आपको विजिबिलिटी मिल गई, कि कितने करोड़ों लोगों के आप घर तक पहुंच गए हो, आपको द ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड। ओके, सो इफ यू नॉट एन, अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते प्रोबेबली? Probably I would have joined the army here, and this is one of the biggest regrets in my life. So you still want to I like will, I will. I'm actually, so there's something called as territorial army, which you can still join till the age of 42. I'm currently ओके, 31. So I still have some room. And territorial army उन लोगों के लिए होता है जिनका एक side profession भी है और वो army को भी serve करना चाहते हैं. so did you have like your family had an army Oh, nobody, background? nobody, nobody in my family has done business or has been in the army. सो लाइक Everybody is व्हाई दिस service plus. फैसिनेशन, लाइक फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड? Yeah, I don't know. Yeah, I think even with Loka, I feel ki I'm doing some bit of service to the nation, whether by creating an India-based platform, probably in the future employing Indians, giving them livelihood. So in every way, you're serving the country, and I wanted to do that by joining the army. Probably God had other plans. I'm doing it in another way now. डेफिनेटली इट शोज ऑन योर पर्सनालिटी आल्सो, द फाइटिंग नेचर जो है ना, वो एक्चुअली आर्मी Oh वाली। yes, yeah, army. I have huge respect for people in the armed forces. That is राइट। great. I mean, if that happens, please let us know. Okay, Yes, I will. so like, what are your top three advices for the upcoming entrepreneurs? Uh, Now you're thinking. no, okay. I'm just thinking how to frame this, but the top three advice would be never surrender, Okay. never give up, Okay. keep fighting. Okay. So I have a All quick three are very question. similar here, but यस, yeah, all three are very similar. But as I said, मेरा advice वही है कि you will only be successful in life is if you survive long enough and you keep the fight on, and you will eventually make it big in life. So I have a quick question, right? So it worked for you. Like It you works for kept. everybody here. So what if I am not meant for? So yeah, I was saying that that दो टाइप के लोग होते हैं ना इस दुनिया में, एक होता है मेसी, एक होता है रोनाल्डो, एंड एक होता है जिसको भगवान ने चुना टू प्ले द स्पोर्ट and he was Right. skilled and amazing as a footballer, and the other one is somebody who wasn't great from the starting. He was the first guy on the pitch to start the training, last to leave. He worked his ass off. एक भगवान की चॉइस थी, एक खुद की चॉइस थी, विद मेहनत आप बराबर हो जाते हो, आप भगवान की चॉइस पे बन जाते हो. सो यू कैन, if you think you're not skilled enough, you can always learn, Still. improve, and get to where you want to So be. who were you? आप I was भगवान definitely की. not Messi. Definitely not Messi, यार. मतलब Okay. not पर Messi by a mile. आप तो 7 बच्चों के बाद 8वें कृष्ण ही आए थे. यार वो बातों में आठवां कृष्ण, में कभी असली में आठवां कृष्ण बन ही नहीं पा रहा. मैं असली में तो लाखों के बाद आ रहा हूँ नंबर में. I don't think that is true, but बट या आई मीन यार जिंदगी में आई जस्ट रियलाइज, पता है कॉन्फिडेंस ना इससे आता है कि जब आप इतनी बार हार चुके होते हो ना, आपको हार से डर खत्म हो जाता है, वहां से फिर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है. And that is what's happened with me. I've gone to what 300 odd VC meetings, rejected by almost 298, 297 of them, and and I'm glad they rejected me. true. You wouldn't have reached there. So right, we have like always seen the beautification of all the journeys. दिखा दिया कि ठीक है आपने ये चालू किया, फूडी बाबा में चले गए, अब आप आ गए. But we never knew about the struggle. But today we do. इतना हाँ, easy नहीं होता और है. वो ना ऐसे छाती पे बैज की तरह पहनना चाहिए, जैसे वो आर्मी True. ऑफिसर्स को मिलता है ना, यहाँ पे स्टार मिलता है, लेफ्टिनेंट, देन यू बिकम कैप्टन एंड सो ऑन. तो वो ना एक वो स्टार है. एवरी फेलियर इज अ स्टार, कि आई ट्राइड, एंड व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग, यू आर ऑलरेडी मोर पावरफुल देन द गाय हु डिडंट शो अप. True. सो Absolutely कीप true. डूइंग इट.
So generally what we think is कि ठीक है वो talented है वो कर लेगा. But what I think is कि hard work can any day beat a talent when Oh, talented absolutely. person is not working hard. बिल्कुल, I True. completely So resonate yeah, there. Yeah, it's okay. all about the rabbit and the tortoise at the end. So Absolutely, absolutely. Like if you are persistent, you will any day, आज नहीं तो कल कभी ना कभी you will reach there. यार दुनिया में ना ऐसे टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है जो सक्सेसफुल नहीं हुए, बट ऐसे आपको बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करी बट वो सक्सेसफुल नहीं Right. हुए. true, absolutely true. And thank you for all So those students. A uh, very important question we are coming yes. to. So like, what are your feedbacks about this podcast? And यार आई थिंक ग्रेट स्टफ यार. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं ना बहुत सारे पॉडकास्ट पे गया, बट मैं ना सबसे ज्यादा एंजॉय वो पॉडकास्ट करता हूँ where firstly the people who are there are younger than me, because gaming as a segment is a young man's right, segment and not an True. old man segment, right? So एक तो वो, and secondly one thing I resonate, वही वही लोकल, मेरे लिए वो localization है कि अब मैं I'm meeting two guys from two people from SRM who I relate to because I went there. तो right. मेरे लिए it makes this even more special, and and I'm glad I came here and did this, and we should probably do it next time on Loka if you guys are free. Yes, we Definitely. love that, So obviously. for how much equity we can expect for this experience Oh, in absolutely, Loka? take 100%. Okay, we can record this as a हाँ, please 100% to SRM, please. But Okay. okay, okay, Yeah. okay. So the last question that I have, that was all also asked to you on TV, हम्म. and we are still very curious. आपके पास हर चीज का जवाब कैसे रहता है? यार हर चीज का जवाब नहीं है, बट एक होता है कि अच्छे जवाब और बढ़िया सुंदर जवाब में ना अंतर होता है. अच्छा जवाब होता है कॉन्टेक्चुअली परफेक्ट जवाब, कि लाइट कैसे ऑन होगी स्विच दबा के, वो होता है परफेक्ट जवाब. तो एक बट सुंदर जवाब वो होता है कि लाइट कैसे ऑन होगी रोशनी लाने से, ये होता है सुंदर जवाब. ठीक है, तो एवरीबडी वांट्स टू हियर द सुंदर जवाब, आई एम गुड एट डूइंग दैट, बट अच्छा जवाब जो होता है ना, वो वो एक्सपीरियंस से, वो स्ट्रैटेजाइज करके, वो डेटा समझ के आता है, एंड दैट इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड बी वर्किंग ऑन. गेटिंग द अच्छा जवाब. सुंदर जवाब वाले फिर भी होते हैं दुनिया में, अच्छे जवाब वाले कम है, एंड यू नीड टू बी द अच्छा जवाब काइंड. Okay, I think you nail every jawab you have. That is Definitely, definitely. wonderful. Like it was a great session for us. बहुत कुछ सीखने को मिला, proper insights जो obviously टीवी में नहीं मिल पाते, but it was really great. Also we saw the potential कि metaverse और crypto NFT अभी because of government अभी लोग काफी skeptical है कि इस चीज में continue करना चाहिए नहीं करना चाहिए, but people and entrepreneurs like you make us believe कि हाँ यार करते रहो, आज नहीं तो कल गवर्नमेंट विल अडेप्ट टू इट. अगर एब्सोल्युटली. पूरी टेक्नोलॉजी उस पे बन रही है तो एंड द पॉइंट इज गवर्नमेंट इज टैक्सिंग इट एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन क्रिप्टो करेंसी आल्सो. सो Yeah, one thing great about even the taxation is, and this is something that I don't know if people recognize this or not. Ajay, I don't think it should be taxed the amount that it has yes, been. exactly, But what it also tells you is that government in some ways recognizing it. Right. exactly, ठीक है, True. so exactly. that's the good part of it. So देख, दुनिया में ना स्ट्रगल के बिना कोई क्रांति आई नहीं है, तो अभी स्ट्रगल की शुरुआत हो चुकी है, इन द वे दैट गवर्नमेंट इज सेइंग कि Right. ठीक है हम आपको रिकग्नाइज कर देते हैं, बट अभी हम आपको Tax इतनी लगाएंगे. सुविधा सोचे नहीं हैं, देंगे. हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल. दैट्स सो वो क्रांति की शुरुआत हो गई है, वो अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा आज नहीं तो कल. एंड डेफिनेटली. And So yeah, can we see some Loka token or something Oh yes, like? absolutely. At the end of till the time we don't have clarity on if crypto can be used as a transaction method, we probably will not introduce blockchain-based cryptocurrency, but we will be introducing tokens in the game very soon. And Like sandbox, हाँ, सैंडबॉक्स तो ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन है ना, right? सैंड. सो Hmm. वी विल बी जस्ट, दिस विल बी लाइक कॉइन्स, जैसे रोब्लॉक्स में Hmm. रोबक्स करके एक कॉइन होता है, जो Hmm. बस एक कॉइन है. इट्स नॉट ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन, इट्स जस्ट एन इंटरनल करेंसी दैट पीपल यूज टू एक्सचेंज स्टफ. सो Yes. वी विल right. बी, बिकॉज इट्स लोका, so it will be called its tokens, so it will be called locans, and the people in Loka are already called locals. Wow. Okay. Wow. Wow. And we are low casting. Absolutely, absolutely. No, we Every hope to it's become getting local. infectious. It is. Extremely, It, extremely. it has all the rights to. Yeah. It is Yeah. absolutely great, and we hope we have this connection with you, like
senior you have been with SRM, with Coding Ninjas, and with us, and Oh, we'll absolutely continue. यार. I love talking to you, and मैं honestly बताऊं कि you guys, मेरे को generally podcasts sometimes get a little dry, but this one Right. has been eventful, and I'm glad यार. Thank you so much. I think it is all Thank you so much. because of you. Yeah. And we Uh, hope to keep connected, and we'll find you in the jury for our Sure, absolutely, Technopoly. And I absolutely, think the absolutely. students will be very excited after they find you Oh, in the my jury. pleasure, yeah, my pleasure to be a part of that event. Yes. Thank you so much. Thank you for being a part of it. Yep. We are absolutely honored, and thank you for coming for the podcast. Yep. It was Pleasure. Likewise, very good. I'm honored, man. Thank you. yeah. Thank you so much.